क्वालिटी प्रोडक्ट हेलो हाँ सर मुझे शुणी पारुछि हाँ क्वालिटी प्रोडक्ट विथ इकोनॉमिकल रेट प्रॉपर रेट हमको तार गाइडेंस दरकार हो को चैनल थ्रू रे गले हमें एटा हमें पाई परिबा। आज्ञा सर के कहउतले मते परिचय देबे कि सर मु भुवनेश्वर रु सागर स्वाई कहतली एंड मु आज्ञा इंटरेस्टेड अछि आगो एक्सपोर्ट बिजनेस में। हाँ सागर मु भाबुछि आर उपयुक्त लोक होउचंती आपनको परामर्श दवा पई फिओ संस्था एवं कमल सर कारण जेहेतु सर फिओ दीर्घ वर्ष धरि काम करछि आमे आपन सारंकर पूरा पूरी आपन सहयोग नियंतु आ विशेष एग्जैक्टली करी सर हाँ मु आपन एई क्षेत्र सहायता करि परिबे जेहेतु आमे संगठन गोटे 2012 मसिया रे आरंभ करिछु ये सर केबे हेले माने एखाटी होउ नथिले आमे आज्ञा प्रारंभिक स्तर रे आरंभ करिकि पाखापाखि आम सहित 40,000 ऊर्ध्व लोक जोड़ी होइचंती महासंघ सहित मु भाबुछि ये एक बहुत बड़ अनुष्ठान राज्यर एवं अनेक काम मध्य राज्य सरकार आम दाबी फल करिसेंती मध्य मु आपन सहायता करि परिबे को जगह रे कारीगर पॉकेट रहिचंती बा आज्ञा सेति जदि आपन जाउछंती मोर कथा धर हमर लोक मान अछंती मु आपन सहायता करि परिबे तांको आपन ठीक रे डील करंतु बा तांको आज्ञा सहायता करन सागर बाबू जदि जाउछंती तांको कथा के सुनंतु कारण ए क्षेत्रटा एते असंगठित क्षेत्र अछि सागर बाबू मु मध्य को स्वीकार करूछि बहु सर समय आपन जहा ऑर्डरटा आनिथिबे सेही अनुसार ऑर्डरटा आपन जो आउटपुटटा मिले नाही मैं ये भी नहीं गोटे तार मु आपन भय देखौ नाही एटा गोटे हुए कारण जेहेतु एटा ता पछ रहिछि एटा गोटे हाथ काम ये गोटे कंपनी काम एग्जैक्टली नुहे जे आपन क्लायंट को मत संसार बुझीबार अछि आपन कहबे गणेशटा आज्ञा हमें गोटे फुटिया गणेश देलु आपन गोटे फुट बदले काहे कि एटा 2 सेंटीमीटर कमी गला काहे कि 3 सर सेंटीमीटर क्लायंट कहबो जदी आपन तांको आमे पूरा पूरी रोकठोक मत जवाब दे परिबे जे ये होछि राइट सर हाथ काम रे निहाती असंगति आसीबो ये मेसिन मेड एग्जैक्टली जिंस नुहे आमे गोटे फॉर्मेट हमर अछि सेते रॉ मटेरियल पुरैले एवं बाहला आउटपुट बाहला को गोटे फॉर्मेट बाहला आज्ञा जेहेतु सर ये गोटे एक्सक्लूसिव क्रिएटिविटी ऊपर जेतु रिलेट करूची तो किछि एपट सब हे पाए प्राइस करिवा एवं आ आज्ञा गोटे कथा एटा गोटे भलो संभावना सागर बाबू एटा मु आर्थर मीटिंग मत कहइछि एटा मत कहउछि कारण एटा जेहेतु कंपनी मेड नुहे आपण चाहिले विभिन्न क्षेत्र विशेष रे धर भुवनेश्वर जदि गोटे रेट रखछन आपण अमेरिका कोलार को तार 100 गुना रेट भी करि पारंती आपण कहियो के नथो जदि आपण क्लाइंट से मावला अछि बा सेतिक व्यस्त अछि जे जिंसरा म दरकार अछि बोली सर हां कारण सेई अनुसार त आपण एटा चित्र कलाटा ना आपणकर आज्ञा सर गोटे गोटे आर्टिस्ट कामटा सर आज्ञा ताले हमें तेणु सर आपण खा जडित हेबु जदि ग्रुप रे आपण को डिटेल हम शेयर करछु ताले जडित हमें टाइम टू टाइम आपण डिटेल माने हाँ आपण हमको हाँ सहायता कर आपण परिबे करंतु करंतु आमे आपण स्वागत करू कारण आपण माने भलिया एंटरप्रेन्योर आसले ही कारीगर माने हमर बंचिबे एवं तांकर जिंस भलर बिक्री हबो कारण हमर कारीगरक स्थिति वर्तमान राज्य रे तो भल नाही अच्छा नहीं निश्चित सर क्योंकि हम राज्य हेरिटेज कल्चर को हमें जदि एक्सपैंड करबा ऑल ओवर द वर्ल्ड ताले बहुत एक्चुअली प्लेटफॉर्म भलो अछि बट ताको प्रॉपर चैनल करे पड़िबो हाँ कारण एबे राज्य सरकार गुडा ट्रेनिंग देकी मध्य दैनिक माने शह शह शिल्पी तयारी करछन्ते प्रति आज्ञा मास आज्ञा बोधे हमर जो ट्रेनिंग सो चलीची हैंडीक्राफ्ट सेक्टर रे प्रति मास हमर 30 रु ना सॉरी 200 रु 300 कारीगर बाहर विभिन्न क्राफ्ट रे आज्ञा सर आप नियंतु এবং বিশেষ করি মু ভাবুছি আউ তো খালি রিপিট করিবি যে এই ডিজিটাল জিনিসর जो पूरा पूरी भरपूर फायदा नियंतु से यूट्यूब सोशल चैनल मीडिया आपको अच्छे एक्टिव होक पड़ो विभिन्न जो प्लेटफॉर्म अछि सोशल मीडिया में यूट्यूब अछि इंस्टा अछि ट्विटर अछि आ लिंक्डइन अछि तो सेइथरे हमको एक्टिव होक पड़िबो एंड डे टू डे होय तो मास को थरे हो कि 6 मास थरे हो हमको सब प्रोडक्ट रो अपडेशन करे पड़िबो सो दैट जे भी हमर बायर ऑफ एक्सपोर्ट माने इंपोर्टर माने से माने कलेक्टिवली भलो प्रोडक्ट रो डिटेल्स पाई परिबे सतरे क्यारियर କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କୋରିଟାକୁ ଉତ୍ତର ଦବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇଥିବା ବାହାର କୋଉଠି ଜଣି କରୁଥିବା ଜଣେ सर ଲୋକ ରହୁ ମେଲଟେ ଆସିଲା କି କଣଟେ ଆସିଲା ତାକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁସାର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବେ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଢୋକରା କାମ ବାହାରକୁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମ ଯାଉଛି ଢୋକରାର ଭେରାଇଟି ସେମାନେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ହଠାତ୍ କାରିଗର ଘରକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା କାରଣ କାରିଗର ପାଖରେ ଯେହେତୁ କଣ କି ମ୍ୟାନ ପାୱାର ଅଧିକ ନଥାଏ आज्ञा ବା ଟିକେ କାମ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବିବାହ ବ୍ରତ ଇତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ କଣ ବଡ ହବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି आज्ञा ମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଏନଜିଓ ସେକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷା ହଉ ଅରୁପା ହଉ ବା आज्ञा ୱାର୍ଲଡ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ସାମାନ୍ୟ ସେମାନେ आज्ञा सर ବର୍ତ୍ତମାନ କାରିଗର ଆଣୁଛନ୍ତି ପଲିସିଂ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡି କିନ୍ତୁ ନା ଆଗ निश्चय सर निश्चय ମାର୍କେଟ ତିଆରି କରି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଦାମ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣ କାରିଗର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ निश्चय सर आज्ञा ଗୋଟେ धन्यवाद सर ଲୋକ बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको सर पर्सनली कांटेक्ट करी
धन्यवाद सर। आउ किसी क्वेश्चन पचारि। धन्यवाद। कमल सर मत सुनी पारछंती? हाँ जय बो, गुड आफ्टरनून। जय बो, माने ये ड्यू टू द ये नेट कनेक्शन वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट प्रॉपर्ली, तेणु आप प्लीज कंटिन्यू। अब अनम्यूट कर दियंतु, अनम्यूट कर दियंतु। जय बाबू अनम्यूट कर दियंतु, म्यूट अछि आपनकर। जय जय बाबू टिके अनम्यूट कर दियंतु। बट सुना जाउछ तो? सर आपन वॉइस आसुची? मो वॉइस आसुची तो? आज्ञा सर। हां ये जय बाबू आपन टिके अनम्यूट कर दियंतु। आज बहुत डिस्टर्बेंस होची आज। अनम्यूट है बोलते। हां हां ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हां हां जय बाबू कंटिन्यू कंटिन्यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मु कहा को देखि पारने कि तो वीडियोस बोधे बहुत कम लोकन रखी आगे पे नहीं समय ऑन करना थी। मु समस्त रिक्वेस्ट करी टिके वीडियो ऑन कले सो दैट जय बाबू देखि परिए, प्लस हमें गोटे फोटो भी हमें नहीं परिबा। जय बाबू यू कैन कंटिन्यू। जय बाबू यू कैन अगेन कंटिन्यू। मो टिके आई एम सॉरी आई एम लेट रे पहुंचली कोन डिस्कशन एपन तो हेइ छि मु टिके पार्टिसिपेट करि पारनी। आ एइ हमें बोधे मु जा अंडरस्टैंड करूची एटी हैंडीक्राफ्ट भी अछंती, सब डिफरेंट एक्सपोर्टर्स अछंती भाई भूनी माने ऑलरेडी या ये किछि स्टार्टअप्स नुआ भी लोक अछंती। हां किछि किछि बाहर भी स्टार्टअप जॉइन करूछंती। करछंती। या तो बेटर होबो इफ वी कैन आंसर टू सम क्वेश्चंस दैट विल बी बेटर। बट मु टिके खाली मु इंट्रोड्यूस दे दूची। राइट राइट उत्कल एक्सपोर्ट्स इज आवर कंपनी जोटा कि ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड। बाबा स्टार्ट करथिले मिस्टर उमाकांत मिश्र आउ 2015-16 रो हमें जॉइन करके हमें वर्कआउट करूछु सेटा को। आउ हमर जो इंडस्ट्री एबे सी फूड रो इंडस्ट्री हमें जतोले स्टार्ट करिथिलु बहुत मेगर बहुत अल्प रो स्टार्ट हेतला। आउ माने इंडस्ट्री मु जतोले कहूची सेतोले बहुत अल्प लोक थिले ए इंडस्ट्री रे। पूरी पूरी गोटे मेजर रोल प्ले करतला सेतोले। हमर जो पूरी रो गोटे बेस थिला सेतोले मैक्सिमम वाइल्ड कैच फिश आउ श्रिम्प्स एक्सपोर्ट होतला। ता परवर्ती समय रे समस्त कल्चर स्टार्ट कले। जतोले कल्चर स्टार्ट कले सेतोले ब्लैक टाइगर थिला, जतोले चिलिका रो चिंगुडीटा बहुत फेमस हेतला ऑल ओवर ओडिसा रे, ऑल ओवर वर्ल्ड रे फेमस हेतला चिलिका रो चिंगुडी। तो आमे जदी सेमिति स्टैटिस्टिक्स को जिबा ऑलमोस्ट 2001 रे हमर 350 रु 400 crores रो एक्सपोर्ट होतला 2001 रे। Am I audible to everyone? Hello? Yes sir, sir. मतलब You are audible. तो अराउंड एबे जतोले हमें 2021 रे देखुचे वी हैव ऑलमोस्ट रीच 3800 और 22 रे हमें पहुंची जाइछु 4500 crores। एबे टोटल ओडिसा रे हमरो 33 टा यूनिट्स अछि सी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज आउ अराउंड 49 एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करूचंती। मु एटा कहया को चाहूची जे आपण जदी एक्सपोर्ट करिया को चाहूचंती इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू हैव अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री, यू कैन आल्सो स्टार्ट विथ मर्चेंट एक्सपोर्ट्स। तो सेमिति 33 टा सी फूड फैक्ट्री रे हमरो ओडिसा रे पाका पाकी 49 टू 50 एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट्स करचंती। टू अराउंड 2015 रे गोटे नुआ स्पीसीज आसला जोटा हमरो ब्लैक टाइगर गोटे हमरो इंडिजिनस स्पीसीज थिला आ गोटे हमरो बाहरु हवाई रे हमरो गोटे स्पीसीज आसला वेनामाई। से वेनामाई जतोले आसला हमरो बहुत प्रोडक्शन हला आ हमरो मार्क करियो ऑब्जर्व जदी करबा हम स्टैटिस्टिक्स रे अराउंड 2015 ऑनवर्ड्स हमरो ओडिसा रु बढ़ी बढ़ी जाउछु, प्रति वर्ष बढ़ी बढ़ी जाउछु। तो एबे
आमे जेतोळे एटी बहुत स्टार्टअप भी अछंती बहुत नुआ एक्सपोर्ट करिया को प्लान करूछंती कि कोन करूछंती आमे खाली एक्सपोर्ट्सटर गोटे आमे एग्रीगेटर भी हेई परिबा सप्लायर भी हेई परिबा गोटे प्री प्रोसेसिंग शेड करिकी ताको प्री प्रोसेसिंग तो बहुत ऑप्शंस ता भितरे रहूची आ पुरी रो जंती ब्रह्मगिरी हला पुरी भी गोटे बेस हला सेमती चारिएटा तो एक्वाकल्चर फार्म बड़ी बड़ी जाउची आ फूड एज एन इंडस्ट्री जेमती वर्ल्ड पॉपुलेशन बड़ी बड़ी जाउची सेमती फूड रो अवेलेबिलिटी भी कमी कमी जाउची तो फूड एज अ प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट तार डिमांड भी बड़ी बट यस आमे समस्त जानि छे जदि आमे एक्सपोर्ट्स रे जदि आमे कथा वार्ता करूछे ताहले गोटे जियो पॉलिटिकल जिंस भी अछि जोटा कि सब देश संगे समस्त भलो कोऑपरेशन रहला ताले एक्सपोर्ट बढ़े किंतु जदि वार टाइम हला कि कोन हला ताले एक्सपोर्ट्स टिके कमी कमी आसे कोविड गोटे जिंस थिला जोतरे कि ऑफ कोर्स फूड ऊपर एते इफेक्ट करलानी किंतु कोविड पाई कि लोकंकर आर्थिक सिचुएशन टा टिके कमी कमी गला तो दैट रीजन हमरो बिजनेस भी सेमती टिके टिके कम माने जदि हमें ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखिबो टिके एक्सपोर्ट डाउन भी हेछि 21 माने जो कोविड पीरियड आउ कौन एग्जैक्टली जानिया को चाहते सेरा जानिले हम कहबाटा मुझे बेटर हो वी हैव अ क्वेश्चंस इन हैंड देन इट विल बी बेटर जय बाबू नमस्कार। हेलो जय बाबू नमस्कार। हेलो हेलो जय सर। आगे सर नमस्कार सर नमस्ते, मु सर भुवनेश्वर सागर स्वयं कहूली आगे आगे एक्चुअली आपण एबे जस्ट आपण डेटा रे कहिले आपण 33 फैक्ट्रीज अछि प्रोसेसिंग रो सी फूड रो आगे एटा बॉडी बॉडी जाउ छे बे सी फूड डेरा से भी पार्क पे नुवा नुवा फैक्ट्री भी आसु छे ने तो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड अनदर 6 तो आपण को डेटा कहले आपण अराउंड 49 एक्सपोर्टर्स भी आपण संगे जड़ित अछंती आपण प्रोसेसिंग यूनिट से माने एक्सपोर्ट करूछंती जेके रही जाउ छे बने हां सर वो क्वेश्चन आगे। दिला हां सर वो क्वेश्चन जे आपण 33 जो प्रोसेसिंग यूनिट एबे अछि स्टिल आगे सेतरे आपण 49 नंबर्स ऑफ एक्सपोर्टर्स आपण थारु एक्सपोर्ट करछन प्रोडक्ट आगे आगे am I right sir यू तो राइट आपण सर आपण मोर क्वेश्चन जे आपण निजे भी एक्सपोर्ट करूछंती कि नाही मु निजे एक्सपोर्ट करू छे मु आमे एक्सपोर्ट यस सर कंटिन्यू सर आमे टिके एक्सपोर्ट करू नथिलु तापरे पुनी आउथरे अराउंड 2016 रो हम पुनी आउथरे बिजनेस स्टार्ट करलु एक्सपोर्ट पुनी स्टार्ट करलु आगुर जतोळे हम एक्सपोर्ट करू नथिलु सेतोळे फैक्ट्री रे हमें लीज देइथिलु जो माने एक्सपोर्ट करूथिले मर्चेंट एक्सपोर्टर से माने एक्सपोर्ट करथिले तापरे एबे पुनी आउथरे हमर नुवा टीम जो माने अछंदी से माने पुनी आउथरे एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी so sir if we are going to export trade and if we have some buyers abroad so you will be helping in Okay. future हमें अपन साथे जड़ित है कि यस हम यस एक्सपोर्ट भी कर निश्चय कर परिबो निश्चय करिबो सर धन्यवाद तो सर बहुत लोग आसिके नुआ जॉइन हाँ, sir, जॉइन नुआ बहुत एक्सपोर्टर एबे अराउंड 8 to 10 एक्सपोर्टर नुआ आछंती आपण देखियो हाईलैंड फिशरीज बालेश्वर स्टार्ट करले एपटे डीएल रिगालिया जो हमर करिसंती मॉल करचंती से माने भी जॉइन करचंती अराउंड 8 to 10 नुआ लोक आसी जॉइन करूचंती आउ बहुत लोक बाहर भी आंध्र भी आसिक ओडिसा रे करूचंती केरल रो भी आसिक ओडिसा रे करूचंती तो व्हाई नॉट ओडिसा पीपल काइंड पीस माने कर पेरेंट सी प्रॉब्लम नाही सेमती इट्स अ ओल्ड फिशरी इटसेल्फ इज अ वेरी ओल्ड बिजनेस माने आपण जेबेटू बाटर सिस्टम जेबेटू चली सेबेटू माछ चली तो एटा चलीबो भी आ फूड एज अ एक्सपोर्ट आइटम सब बेला पर्यंत चलीबो आउट से क्वेश्चन अछि एक्चुअली मोर होम टाउन रिलेटेड नियरेस्ट टू पारादीप एक्चुअली तो पारादीप फूड अंडर रे मु देखुतले डाटा किछि सेठी सीएचए बहुत कम अछंती हमर पारादीप जोटा सेटा बेसिकली माइनिंग एमाने सब बेसी एक्सपोर्ट करछन जो हमर जो फूड आइटम ता जे
ये तो काले एक तो सेठी एते बहुत लोक चेष्टा करिसनि पारादीप को हब करिया पई के किंतु हमको जो सुविधाटा वाइजाग रे मिलुची जो सुविधाटा कलकत्ता मिलुची से सुविधा एपर्यंत पारादीप रे हेई पारि नाही किंतु करूचंती हमर आज्ञा लास्ट गत 2-3 वर्ष हलानी किछि जण ट्राई करिके एटलीस्ट किछि करिसनि कोन असुविधा रहउची फूड आइटम खाली एक्सपोर्ट हबनी इंपोर्ट भी हवा दरकार जो जो पोर्ट रे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रो सुविधा रहइबो तांकर डॉकिंग फैसिलिटी रहइबो कंटेनर सुविधा रहिथिबो हम सेटा को हमको इजी करिया पय जो ପାଇଁ ଆମେ ଭାଇଜାଗ କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଭାଇଜାଗ ଟା ସୁବିଧା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାରାଦୀପ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି ହଉଛି ଆଉ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ ବି ଏବେ ଆମର ଓଡିଶାର ବଢିଲାଣି ପାରାଦୀପରେ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଟ୍ ଟା ଟିକେ ଶସ୍ତା ପଡିବ ଭଲ ବି ହବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଫ୍ରେଟ୍ ଶସ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ସो ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସେଇଟା ଫରୱାର୍ଡ କରିପାରୁ ଆମ ବାୟର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ ଆମେ ଟିକେ ଓଡିଶାର ଯେତିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ପର କଣ୍ଟେନର वी कैन अर्न सम मोर मनी इफ पारादीप कि गोपालपुर की पाखापाखि जदि किछि हेई पला हम ପାଇଁ ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଇଜାଗ ରୁ ଆଉ କୋଲକାତା ରୁ मैक्सिमम शिपमेंट करू सर 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 एतिकी कहया थला आपण माने तो ए बिजनेस ट्रेड रे बहुत जायंट हेक अछत आपने तो हमें बहुत सब सब स्टेज रे कोन हुए देयर इज अ फर्स्ट स्टेप टा बहुत इंपोर्टेंट फर्स्ट स्टेप टा हमरो जदि हमरो इंटेंशन इज राइट दैट आमे ओडिशा ପାଇଁ କି काम करूछु हम मटेरियल रे जेतोळे गोटे को फॉरेन रो कंपनी जेतोळे हम प्रोडक्ट लउचंती जेंति इंडिया रो नाटा रहिबो आउ आमे हमकु एबे गवर्नमेंट हमकु एने कोरिया गवर्नमेंट डाकितुला हम कोरिया को विजिट करलु जोटी हमें जानी पारलु जे देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन द फूड इंडस्ट्री फॉर ओडिशा कारण आमे आजि पर्यंत रॉ मटेरियल ही बिकुछु चिंगुडी आनिलु ताको प्रोसेसिंग करलु बरफ रे पैक करलु ताको एक्सपोर्ट करलु सेटा रॉ मटेरियल बट वैल्यू एडेड करि पारने वैल्यू एडेड एपन तो हमें से स्कोप रे जाई पारनु ता पई कि हमको गवर्नमेंट रो बहुत हमको हेल्प दरकार होची कारण हमरो टेस्टिंग फैसिलिटी रहबा दरकार सर कारण सेटा रेडी टू ईट हे जाउची तो नॉर्मली कोन होची हमरो जो चिंगुडी जाउची सेटा चाइना गला कि वियतनाम गला सेठी पुणी रिप्रोसेस होची तापरे जाउची सो आमे जतले 5000 कोटी रो बिजनेस आमे जतले प्लान करूची ओडिसा रो ता भितर बहुत अल्प वैल्यू एडिशन करूचंती एबे करूचंती बट नॉट माने एंटी आखि दृश्य भले के करूनांती समस्त स्टिल सेम जिंस रॉ मटेरियल वैल्यू एडिशन करू रॉ मटेरियल दोचंती तो हमरो बे नेक्स्ट जो फ्यूचर जो प्लानिंग होउची बेसिकली हाउ टू अर्न मोर मार्जिन by changing this raw material value को ताको value addition करके करी के पठेबो सेटा को हमरो लक्ष्य रहउची आउ हमको स्किल स्टाफ दरकार हमको नो हाउ दरकार हमको टेक्नोलॉजी दरकार ए सब हे गले हम कर करी सो फॉर दैट सर मोर आउट क्वेश्चन जे फॉर दैट जदी हमें रिप्रेजेंट करि पारे ए जिंस को सरकार आगरे तो आपनकर किछि एसोसिएशन भी किछि गठन हेछि कि किछि माने ए वर्ष 2 वर्ष हलानी जो माने सब टॉप 10 कंपनीज अछंती तांको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करछन जे दे हैव टू यूज मैक्सिमम वैल्यू एडिशन केमति करि परिबे आ तांको मैक्सिमम सब्सिडी केमति काम मिलि पारि बोली करा होची तो सेटू गोटे पायलट प्रोजेक्ट चाली छि आईटीसी हला फाल्कन मेराइन हला केतु जन को नेही कि सेटा गोटे गठन करा हिची से माने नुवा फैक्ट्री ता पे करिया पड़िबो वैल्यू एडिशन पई कि सब बहुत इंपोर्टेंट होची कैपिटल हमरो जो फैक्ट्री जो करूछु तार इवन आपण जतले फैक्ट्री पसिकी जाउचंती तार जो प्रोटोकॉल अछि गोटे गोटे खाली आपण सेफ है कि जिबे केमती से फैक्ट्री भीतर को ता भीतर 2-3 करोड़ 4 करोड़ से खाली इन्वेस्टमेंट रहि जाउछ सही तरह पसिकी केमती जिबे ता फ्लोर रे पसिबा पई के आउ ता पर मशीनरी बहुत अधिक पड़ुछ सो सेट पई कि कैपिटल इज आल्सो अ बिग चैलेंज तापर आउटे रहउची कोड माने जस्ट टिके स्मॉल फूड मटेरियल जदी कंटामिनेशन हला एंटायर कंटेनर विल बी रिजेक्टेड एंड इट विल नॉट बी यूज्ड बाय ह्यूमंस तो तार रिस्क फैक्टर हां गोटे जदी किछि कोडी कंटामिनेट हो तो टोटल माने लॉट ऑफ पेरिशेबल हे जिवो लॉट पेरिशेबल हे जिवो से पई कि हमर सपोज एबे गोटे कंटेनर हम पठौ छ हम प्राइस धर कोटी टंगा हला जदि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जो सेटा 4 टाइम्स हे पारे कि 3 टाइम्स हे पारे कारण से प्रोडक्ट आउर कमी जीवो वेट कमी जीवो कि कोन हो तो सेटा हम जले पठौ छ सेटा रिजेक्शन हे जाउची इनकर ह्यूज लॉस तो सेटा गोटे रिस्क फैक्टर भी रहउची ता संगे
तो आमे चेष्टा करूछु फॉरेन कंपनीज जति से माने तांको स्किल सेटअप नै के आसीबे टेक्नोलॉजी नै के आसीबे आ हमकु गोटे फर्स्ट जंदी छोटो पिला को आमे हाथ चले कि किछ बाटो चले पारुछु सेमी Yes. जदि हमकु नै के गले डेवलप नेशन माने हमकु टिके Welcome नै के करे, आगो better बढ़ले welcome आमे करे. आमे ताले जाई परिबो नहले इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एट द मोमेंट से रिस्क फैक्टर रहउचे पर्यंत भी. risk factor rohuchi because we are dealing with food so food technology am tal bisi hochi so even slightest of the slightest contamination can make the food Exactly. problem karibo taku because we want to give safe food to the customers Yes. jodi food ta unfit he jauchi tal kemti kon karibo for example it is more related to the people who are working Yes, sir. तो जदि स्किल लेबर नथिबे से माने टॉयलेट को गले हाथ धोइलेनी पळे आसिले सेंटर Yes, साल्मोनेला exactly. हला सेंटर पूरा कांड सो इट इज Exactly, नॉलेज sir. बेस्ड इट इज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर Sir. तो से पे कि गोटे माने हमर जो जति कि फिशरी पिला पाठ पढुचंती नॉलेज बेस्ड लोको हम पाखु केमते आसीबे हायर करके रहिबे सेटा भी गोटे बिग चैलेंज रहि जाउछ मन पे कि एटा खाली एमती नो कि माछा केडलु माछा बिकि देलु आज्ञा से हो. ସେଇଟା ଆଉ ନୁହଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ୟାରାମିଟର୍ସ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ Once it is actually packed, माने जेतु पेरिसेबल आइटम एठी टेस्टिंग हला परे भी कस्टम रे once it is packed I mean sure shot हे पर जे once it reach the airport तापरे समान टेस्ट कला को कोन हेतिबो सेटा रिस्क फैक्टर रहउछ. ନା ସେ बेसिकली कौन हुए राइट फ्रॉम द कैच जो हार्वेस्ट होची पॉन्ड रू till you are kept in the cold storage और तापरे जेतବେଳେ आपण रेफर कंटेनर रे पठौचंती सब स्टेज रे हमको देखि के वर्कआउट करिया पड़े तो हमको लागुची एटा पेरिसेबल बट आमे जेतବେଳେ ताकू आमे कन्वर्ट कर दोची टू फ्रोजन सेटा तारो कंडीशन रहि जाउची 1.5 years आमे सेटा को केमते रखि परिबो तार एक्सपायरी डेट ऑलमोस्ट 2 years पहुंचली बट आमे भाबुची 1.5 years में रहि परिबो आराम से जदि हमें ठीक से पैकेजिंग कलु तार सिस्टम को हमें जदि ठीक से फॉलो कलु तो पेरिसेबल टा रहउची कोठी ना रॉ मटेरियल जतले हमें पोखरी रो बाहर करके हम फैक्ट्री को आनलो सेतबेले पेरिसेबल रहउची जतले प्रोसेस हे जाउची इट इज नॉट पेरिसेबल जदि आपण कोल्ड चेन टा रखुचंती ताले सेटा पेरिसेबल नाही सर काइंडली रिक्वेस्ट करबी जदि आपण डिटेल्स लाइक कांटेक्ट नंबर एड्रेस शेयर करबे सब कमल सान को एनी पीओ को जानतु एमपेडा को जानतु समस्त पाखरे हम वेबसाइट भी अछि किंतु यू कैन गेट डिटेल्स ओके सर थैंक यू फॉर सागर आपण कोन करंती एबे एट द मोमेंट कोन करचंती एक्चुअली मोर अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट किछ माने मोर रिलेट करि नै मोर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन अछि एंड मिनरल वाटर प्रोडक्शन अछि पारादीप मिनरल वाटर प्रोडक्शन बट आई वाज ट्राइंग टू कम इनटू दिस ट्रेड ओके Thank you, sir. Thank you for the information. Thank you, sir. Any other person who have any question, please they can ask. Javabu, thank you very much. So nicely you have presented yourself regarding the Thank seafood. you, Kamalabu. Your role, whatever you're doing, is also very nice. You are bringing all the people into the platform. Normally, very few people know that मुझे थोड़ा आसे कि even इटी पहुंच चली UK रू MBA सारी की हमें गोटे फियर अपन गोटे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रो गोटे शॉर्ट कोर्स करतिले जोते हम पार्टिसिपेट करतिले इटी बानी बिहार लोकल यूनिवर्सिटी रे yes it was very helpful also and you're always there with the exporters thank you very much thank you very much any further questions for Mr. Jay and Jay Babu is a very nice gentleman recently से जाइतिले हम कोरिया जाइतिले गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ रु आईएलओ तरफ रु जाइतिले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तरफ जाइतिले बहुत भलो एक्सपीरियंस धरिके आछंती आ जेतर दरकार पड़ले हमें तांको सहित भी तांकर हेल्प सपोर्ट न जेतु से ग्राउंड रियलिटी रे काम करचंती ग्राउंड लेवल रे काम करचंती वेरी सीजन वेरी प्रोफेशनल भल लागे जेतु बाहर पढ़ी के आछंती आ जदी किछि क्वेश्चन अछि आपण पचारि परिबे अदरवाइज हमें देवी सर पाखु जीवा हां हेलो हां जगदीश बाबू पचारंतु सर नमस्कार सर नमस्कार गोटे क्वेश्चन थिला जय सर को पे yes please
जय सर फर्स्ट नमस्कार नमस्कार सर एबे जो मु संबलपुर कहूँ सर आगे बर्तमान आपण जानथिबे हमर महानदी रे केच जानिछु केज फार्मिंग आगे तो आगे सर सेटा को किछि एक्सपोर्ट पई किछि करि हबो सर सेटा एक्चुअली देखंतु हमरो हमें तो मैक्सिमम करूथुलु श्रिम्प चिंगुडी जी तापरे हमरो कटल फिश स्क्विड एंड किछि चाइना रो मटेरियल जोटा थिला सेटा हमें एक्सपोर्ट करूथुलु फ्रॉम ट्रॉलर जो माने माछ धरि के आनंती हम फैक्ट्री को दियनु सेटा एक्सपोर्ट करथुलु एबे जो सर केज फार्मिंग टा जो करूचंती सेटा के पायलट प्रोजेक्ट रो अछि काना सेटा रो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जेमती एक्चुअली हमें जेतोले कौनसी माछ को आम कल्चर करूचु कि हमर केज कल्चर स्टार्ट होईची सेटा कंपटीशन करिया दरकार वियतनामीज फार्मर को सहित अलग अलग जोटी फार्मर से मान जदी कम कॉस्ट प्रोडक्शन करि दोथिबे मटेरियल टाको आमे तांकू एक्सपोर्ट करिया त टिके डिफिकल्ट अछि से पई एटा जेहेतु पायलट प्रोजेक्ट रो अछि सेमाने भी लागिचंती केमिति एटा को सस्टेनेबल करिके आगु बढ़िया को चेष्टा करूचंती एटा गोटे डिस्कशन पे अच्छा तो हेई पारे आगामी दिन रे से जिनसटा हेई परिबो बोधे जदी कॉस्ट इफेक्टिव हेई पारला हेलो हाँ जाऊ हेला हेला हां सर हाँ तो सेटा एबे एबे जो माने सब करि चंती सेटा गवर्नमेंट आ ये मिसे कि मैग्नम भी सेतरे गोटे पार्ट अछि हमर गोटे सी फूड एक्सपोर्टर जने पार्टिसिपेट करचंती तो सेटा सर किछि दिन पिले सेटा जणा पड़ जिवो केमिति हमें ताको पिलेटिंग कर परिवो केमिति ताको एक्सपोर्ट कर परिवो सेटा गोटे पायलट प्रोजेक्ट है कि स्टार्ट होइबो जाहले 2-3 वर्ष आउरी लागिवो सेटाको आउ ठीक हवा पई के कारण से जो स्पीसीज करूचंती से स्पीसीज रो जेतु सेटा टिके कम वैल्यू रो प्रोडक्ट्स वियतनाम रे बहुत हेवी प्रोडक्शन हुए से तो से हां से पर्टिकुलर प्रोडक्ट वियतनाम रे बहुत अधिक प्रोडक्शन हुए से पई हमको बहुत अधिक प्रोडक्शन कले हमको सुविधा हो एक्सपोर्ट करिया अच्छा जगदीश किंतु थैंक यू हां सर किंतु भलो जगदीश भलो क्वेश्चन पचाले जो केज कल्चर आसी ता बहुत भलो गवर्नमेंट ताकू प्रायोरिटी दउचंती आउ भलो प्रोडक्शन हेले हम ताकू भी एक्सपोर्ट करिवो हमको जहां भी प्रोडक्ट मिलियो हमको एक्सपोर्ट करियो हमको बेसी खुशी हां सर मोर जने रिलेटिव से फिर अछंदी एसोसिएट अच्छा जगदीश साहब आउ दी जन स्पीकर अछंती आउ दी जन स्पीकर सर, सर। अछंती मेन हाँ, सर। पाणीग्राही साहब भी ओके अछंती हमें ओके जय सर थैंक अपन यू नंबर भी शेयर थैंक कर यू साथ कथा हेबे थैंक यू श्योर वेरी श्योर मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू Yes, sir. आई Thank you very much, रिक्वेस्ट sir. देवी Thank साहब को you. रिक्वेस्ट करी सर कहबे तापर पाणीग्राही सर कहबे जे जीवा पुरो टिके समस्त टिके प्लीज वीडियो टिके ऑन करे सो दैट हमें से फोटोटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को हमें पठेई परिबा समस्त टिके वीडियो प्लीज ऑन कर दियंतु सो दैट हमें टिके फोटो नहीं परिबा वंडरफुल तो गैलरी व्यू दियो राइट ओके जाओ एटा पूरा देखला पर द वुमेन पार्टिसिपेंट्स इज मच हायर व्हिच इज वेरी नाइस बहुत अछंती आज वेरी नाइस इवन भी हमर बाहर पार्टिसिपेंट भी रहंती आपनकर Right. से ऑस्ट्रेलिया रो वियतनाम रो Very रहंती एथर Right. मो बाहर नेट भी नहीं ठीक से ये हो नहीं अदरवाइज Right. हां बहुत आज एथर वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत अछंती एथर बहुत 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 जन थिला थैंक यू वेरी मच ये देवी सर को रिक्वेस्ट करबी सर किछ कहिए करिया पई जेतु से जने राइटर हमर हैंडीक्राफ्ट्स रो देवी सर को देह खराब भी सत्य भी जॉइन करचंती देवी सर अछंती आपण देवी सर अछंती प्रिय बाबू अछंती आपण देवी सर पाणीग्राही सर आपण कंटिन्यू करंतु मोर टे नेट प्रॉब्लम होची आपण प्लीज कंटिन्यू करंतु पाणीग्राही ओवर टू यू पाणीग्राही सर एसएन पाणीग्राही सर नमस्कार आई एम ऑडिबल Sir, you are audible, but since Pandya sir has muted himself. पाणीग्राही सर टिके अनम्यूट करंतु म्यूट रो अछि
So ଆପଣ ନମସ୍କାର। ଅନମିଟ୍ କରିପାରିବେ? ନମସ୍କାର ହଁ ଆସିଲେ। ନମସ୍କାର Namaskar. Sir, you can continue, sir. स्टार्ट करिए Panikar sir, you can continue. Namaskar. So we have started this program with the FIVO. I'm been associated for last 10 programs. And this is, I believe, this 12th and last program. So I'm all these programs I'm associated except 2 programs. So I have pleasure that I'm sharing my views. And you can see my YouTubes also. Very small YouTubes I created for the budding exporters, the new entrepreneurs who are entering into the export field. I've created small videos. Some of the links also I shared in the chat box. You can have the links. And these programs are started as a district as an export hub. Districts as an export hub, that concept was initiated by our Honorable Prime Minister, is his brainchild. So he has started this program. Just I'll show my video presentation. So you able to see the video presentation now? Sorry, my PPT presentation now you able to see? Yes, sir, it is visible. Yeah. So this is how our Prime Minister announced his vision, because he is a great visionary leader. Luckily, we have at present. So he has announced in a 2019 Independence Day speech about this concept, districts as export hubs. The concept is to develop from the rural areas, the small areas, which is from the village even, we can reach to the export global level. So his concept is local to global. So based on this concept, of course, later on, DGFT and other associations are joined together to move forward the concept. As per the concept, the states also now involved in a great way. Earlier, the export is always about the center's baby, like center promotes the export promotion policies, and export related all the regulations and all things are center's baby, and center is looking after the export and imports. But now the concept is changing. Now the states has taken the role. So most of the states also started their export promotion policies. So Odisha state also, luckily, we have had a policy. It was earlier, it was in 2013, we have the policy that was again revised. And last year, in the month of December and November 2022, they started the export policy, state policy now. States also now rigorously involved in the export promotions. So it's not at the state level, but even come down the district level. Now at the district level, the district collectors become the chairman of the committee. The district export promotion committees have been formed. And all over the India, 733 districts. In each of the district, the committees have been formed. And the collectors become a chairman of the committee, so that initiating the driving the export promotion from the district levels. From the small village level also, it is now possible. Some of the examples I'll tell you later, because government is proactively acting. How to send is not like a larger container loads, need not be always. It's not possible also. For example, our artisans are there. For them to send the artworks, they can't make the container loads. Small packets has to go. So for that also, Amazon, for example, is come forward. Amazon exports is very beautiful concept now. Anybody small packet also can export through Amazon. And another policy in the month of December, CBIC, Center Board of Indirect Taxes and Indirect Taxes and GST, they have formed, brought a circular. Through that circular, even the post office also now become a nodal offices for the export. Means through postal office also we can send the goods for the export. Already it was long back started, some more than 5 years back. But this is in a major, very limited post offices. But now they want from the every district level post offices, they want to send the goods. Later, maybe it come to even taluk levels, so that we can send the goods through
even post offices, small packets. So that is the vision now. So therefore, everyone at the small village levelers, towns, and other things also, they can now able to think about the exports. Earlier, the exports means is only from the Mumbai, Chennai, Kolkata, and other Visakhapatnam, like that. We are thinking of larger ports, but it need not be now. Smaller areas also we can send, and that connectivity also they're making. In future, maybe it takes a little bit time, but in future it's become more feasible to send the export from the small villages. Small packets also can be sent. Even Indian foods, like food items, even though for most of the Indians are staying in abroad, the relations are there, and we can send the goods. It can be treated in export, and export incentives also is entitled for that. So whatever we send a small packet, for that export incentives also we can claim. So that is a good advantage. So that is where the export promotion policy is also encouraging to send through small villages levels. So that is what the concept of this district as a export hubs. Maybe sometime later it can be talks at a taluk as an export hub, or later can be village also in an export hub. And Tirupur, if we see, once upon a small town, a small village is not a town, a small village, but now it has become export hub for the garments. So why not many other such export houses can develop, or export hubs can develop? So that is how the concept going forward about the means our Prime Minister's vision to make the export from each of the district wise. Okay. So here the Odisha district means every district also they have find the groundwork also done. They're done. It's not like a vision. It is not a dream. It is not like a something long term we are thinking about. It's not a promise and talks or political games. No, but it is about the reality. They made a very good groundwork also. Each of the district wise, all the 733 district wise, they find out each of the district what are the potential products which can be exportable. So in India, Odisha also, we have the list of these are the products. Each of the district wise, the products have been identified. So this is the groundwork is done very excellently. So from Puri, now we are talking about from Puri. These are the works you see, handicraft works, Patachitro, and marine products. The people that's works are very popular artworks. So this is how the from each of the district wide already products have been identified. Those are potential for export. And now the committees have been formed at district levels to find out how these export products can be made taking the global level from the local to global. So that is the concepts going forward. So any difficulties are there, they are identifying, encouraging for the lot of budding exporters, new entrepreneurs into the export field, and lot of incentives are being provided. And this is how the district wise it started. Now coming to the Odisha art, because now today's topic we are talking about the people is Culturally, yeah. So let us understand about this Odisha art tradition. Culturally, Orissa is renowned for the temple of Lord Jagannath. As this holy land within Orissa boasts of 52 handicraft variations, Orissa is the home of traditional arts and craft. Odisha has got a rich heritage of traditional artifacts being produced in the cottage-based sector, i.e., handicrafts. There are around 40 types of handicrafts such as brass and bell metal, cane and bamboo, art textiles, silver filigree, stone carving, applique, dhokra casting, terracotta, wood carving, woolen carpet, palm leaf etc. are being practiced in the state. The sector produces goods, which is channelized through 10 to 15 exporters. The handicraft sector supports around 2 lakh families in the rural areas of the state. Major employment provider in the handicraft sector is cane and bamboo, 25%, followed by art textiles, 9%, applique, 7%, brass and bell metal, 13%, stone carving, 6%, and silver filigree, 6%. These handicrafts employ around 70% of the artisans, whereas the production is concerned these contribute around 85% of total value of handicrafts.
So especially with modern people, Culturally, Arisa is renowned for the temple of Lord Jagannath. As this holy land within Arisa boasts of 52 handicraft variations, Arisa is the home of traditional arts and craft. so we have a biggest challenge about the handicrafts is small consignments. Nearby, no good port is there in Odisha. Though there is a major port is there, Paradip is a major port, but we have a handicraft that it is not going with small container loads. And if we want to send the container loads, it has to go through either Visakhapatnam port or the Calcutta port, or even some people are sending even to the long distance to the JNPT port and Mumbai port. So this is the difficult challenge we are facing. The biggest other challenge is the artisans are not too properly organized. This is a very good unorganized sector, but unorganized sector through that going through this very challenging field of the global market is very good challenge. It's not so easy for the global market. Lot of risk factors are there. Lot of logistics related aspects we have to understand. So all these challenges are there. At the same time, about the payment related. So all the challenges are there. Therefore, it's not going easy to go for the handicrafts for the exports. But if the clusters are formed, of course, government schemes are there. Formation of the cluster, from the clusters as a combination of the various peoples coming together, supporting this art, then exporting, then it may be possible. And that way we have to go even still long way. The clusters are not working even long back. The cluster culture means programs have been developed, but it's not successfully happening because of the various reasons and various factors. So these are the various biggest challenges for the handicrafts. But handicrafts are knowing that knowledge about the how to export, how to get the overseas buyers, and then a proper documentation related and incentives, then about the exports and the finances. So all these factors, if they understand, and government also making it is feasible to send the small consignments through the courier mode or through postal mode, then it can be in over a period, not immediately, but over a period, definitely the concept means the art, the handicrafts can be exported. In another field is lot of tourists used to come. When the overseas tourists come to India, they also attracted with the handicrafts. Then they may be selecting some of the handicrafts, but the biggest challenge for them also carrying. Most of the countries, other countries, what they do is once you select any product, immediately they arrange the logistics to reach at their home state or home town and home place and overseas, that will be reached. But in India, that is not at happening. We are not able to make it promise and make it even the promise we are not fulfilling. So that is the biggest challenge, that trust is not developing. The trust has to be developed, and with proper confidence that when the overseas, the tourists used to come, or even not only overseas, even Indian tourists also visiting many other places. They are interested about any of the handicrafts. The logistic arrangement is the biggest challenge we are facing. If that is solved, that arrangement is made in proper with confidence and guaranteeing of the reach of the material with no much of the damage. Damage is because the handicrafts and all things, damage if happens, then entire lot is like entire thing is like rejected. Nobody interested. Suppose they wanted the Ganesh Murti, any damage happened to that Murti, we don't keep it. So that is why we have to ensure proper packing also. Packing is the biggest challenge again. And the logistics, and then proper reach of the goods or materials. Then about the transaction related, all the difficulties, the documentation too, and other finances related has to be properly arranged. So if this is met, lot of scope is for the handicrafts from Odisha. So with this is with the handicrafts. Then let me move for the aqua related marine product also. So just a minute, because Odisha has a larger
area of coastal belt. So Odisha has blessed with that large coastal belt, and marine is one of the potential export item. And lot of exports are happening, but still lot of growth is there. And Odisha at present going towards the export of the mostly iron and steel, aluminum and iron ore. These are the mineral related or metal related exports are happening. That is most of the growth is in this sector only. But of course, there is a lot of potential for the handicrafts and marine also. And for marine products, some of the India statistics let us understand. Indian marine sector. India has become the third largest fish producer and the fourth largest exporter of fish and fisheries products in the world, taking brand India from local to global, accounting for 8% of global production. Marine resources of India constitute a coastline of 8,118 kilometers, exclusive economic zone (AAZ) of 2.02 million square meters, and a continental shelf area of 0.53 square meters. The inland resources include 0.27 million kilometers of rivers and canals, 2.45 million hectares of ponds, 3.15 million hectares of tanks, and 1.2 million hectares of floodplain lakes. In 2020-21, India's total marine and inland fish production stood at 14.73 million metric ton (MMT), which includes 11.25 million metric ton and 3.48 million metric ton from inland and marine sectors, respectively. The fisheries sector plays an important role in the Indian economy. It contributes to the national income, exports, food and nutritional security, and in employment generation. This sector is also a principal source of livelihood for a large section of the economically underprivileged population of the country, especially in the coastal areas. The sector contributing about 1.09% to the country's GVA and over 6.72% to the agricultural G versus A fisheries sector plays a crucial role in the national economy and is one of the key contributors to the country's foreign exchange earnings. India recorded highest export of 1.36 million metric ton worth $7.76 billion in free 2021-22. In terms of employment, the sector supports the livelihood of over 28 million people in India, especially the marginalized and vulnerable communities. So this is about the Indian potential, and we are already in the third largest producer of the marine products, fishery products, and fourth largest exporter, and still lot of opportunities there, potential is there for further export. And this is, you see, production over a period of time, how the production is increasing, drastically increasing. And exports also, if we see, except of course the Corona period is fallen down, that 2021, again it is picked up. So that is how the growth rate, growth is very fantastic, growth is go, but still lot of opportunities there for the export. Here in the challenges I want to tell you, the export challenges are mainly for the Odisha. We don't have the containerized cargo, means port. The Paradip port is there, but that is mostly about the bulk shipments, not for the container shipments. Very rarely our small consignments are going, otherwise not proper consignments are going. Even though those who are making certain experimentations, they are getting suffered because of the delays. So therefore, the preferred ports are again go to the Visakhapatnam or the Haldia port, or other ports are going outside India, Odisha, but not within Odisha. So therefore, lot of logistic costs are there. That is the biggest challenge. Because of that, we are not able to be competitive, or we are we are cutting our margins to export. So that is the biggest challenge. The second challenge is about proper packing and refrigerated the containers, refers. That is also a biggest challenge, that availability, because those are costly. And that in the entire journey, entire logistics, the transaction, that proper temperature has to be maintained. If it is not properly maintained, then again it's a challenge about it's a perishability, because these are perishable items. So therefore, it is the biggest challenge if you're not able to maintain that temperatures. Many this type of challenges are there. Larger the transaction time,
then largest the challenges also about the export. So these are the some of the challenges we have facing. And of course, some of the exporters are even not knowing properly about the export documentations. Specific countries also have related to their own country, certain regulations are there. If you are not properly following, and also it is not like some time back I did, and today also I can do the same way. No, time to time we have to also get economics updated about our knowledge, because a lot of new regulations used to come, and country specific or the product specific, like marine products also there is an inspection, and I think that those are product specific. And which countries you are sending, that's country specific also, there is certain documentation related, some regulations are there, that those are has to be followed. And inspection related also, before the pre-shipment inspections, that is also very challenging assignment, because if you are calling the inspectors from the longer distances, they cover they charge a higher cost, because nearby if it's not available, then it is again an additional cost. So these are the certain challenges we are facing for the exports of the marine products from the Odisha. And recently our Piyush Goyal, our Commerce and Industry Ministry, in one of the event organized by the Marine Products Export Development Authority, he has talking about, at present we are exporting $7.6 billion of the exports in 2022, and there's we can go even going to $20 billion. That much of the potential we have. At present, of course, we have much less. If you compare to the potential within next 5 years, that is the target we have kept. 20 billion export means dollars of the export of the marine products in next 5 years. So it is possible, provided many of the shortcomings we have to bridge it. Many of the challenges we have to overcome, and especially with the value addition. Traditionally, if you see Indians, all type of products, not only I'm talking about the marine products, but if you take the many other food products also, or even iron ore and steel metals also, if you see, mostly we are the raw material or low value added exports are we are doing. So that is also a challenge. There an opportunity is there, but again a challenge how to make the value added. Value added means higher means of employment also within India, because there are higher value addition means higher range of the production facilities happens in India. As a result, lots of employment generations, and also for the better margins. So therefore, India as a whole, we are getting much benefit out of the value added products. But that is again a challenge for the value added products also. We should have a certain technology, the capital, also that knowledge about also how to maintain things. So those are the biggest challenges. Of course, Government of India made lot of facilities, ease of the doing business, means of foreign investments and other thing also very easily it can be made, or the technology can be brought from the latest technology we can adopt. So all the facilities are made, but again the capital is again a big challenge. The challenge of the capital and about the technology, these are the challenges factors. And also little bit of factors still is there, like some of the states like Odisha, the labor related or the union related. Paradip Port especially facing this type of challenge. Paradip Port is highly unionized, and also some mafias also ruling that port, so that people are going afraid to go through the Paradip Port. They don't want to experiment. They want to go with a safe way to the Visakhapatnam port. So this is also a challenge we have to look into. So these are the some of the aspects I want to speak. So for the more details about the how to export, very fundamental, very layman approach, like I made some videos, and you can go through my videos also, YouTube, and also you can go with the various other as also there about the finance also there, about how to get the finances, what are the incentives, and who are the export promotion agencies or other supporting organizations are there. Those also I made.
small YouTubes, so that you can go through my YouTubes. More than 100 plus YouTube presentations are there. You can go it and get it. Okay, any questions? I am there. Mr. Kamal Babu, now you can take it. Namaskar, sir. Kamal. Yeah, namaskar. Sir, if you don't mind, kindly share the PPT. Can you please share the PPT? Yeah, I will share. With pleasure. With pleasure. Sure. And also you can go through my YouTube presentations. Sure, sir. Sure. More than 100 presentations are there. Some of them are shown in this link also, the chat box. So you can go Yes. through the chat box and go through it. Okay. So Okay. once we view one of them, we can subscribe the channel and go through all. Yeah, sure. Thank you, sir. Okay. Yes, Kamal Any- Babu. Hi, Back sir. to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Any question for Panikray, sir? କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ କହିବେ। Hello. Kon doubt thile pacharantu. Hello, କିଛି doubt thile pacharantu kondalu. Any question ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ସାର୍ କଣ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଙ୍କର ଅଛି। Any questions ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କାରଣ ଏଇ ଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବ ଟିକେ ଇଏ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତ ବହୁତ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିପାରିବୁ ଇଭେନ୍ ବି ଆମର ଫିଜିକାଲ ମିଟିଂ ରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରିବୁ। ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି। Sir, once we get into the deep sea of export, many questions will arise in the future. So we'll request you also to share his contact. So further we'll be asking. There are many steps to go ahead. Okay, thank you, sir. And I'll request Devi sir is there from handicap sector. Sir, यदि क्वेश्चन नहीं तो ताले सर हमें ये कर दो सर वाइंड अप कर दो सर। Of course, I have shared my contact details. Anybody interested, you can contact me. Otherwise, through Kamal Bhai also you can contact me. So we can discuss further. Thank you very much for joining with us. And this is the last webinar. And this year, I don't think that we will be get another approval from the Ministry of Commerce. But this time we are going to get another 11 physical programs in districts wise. No doubt we have given the choices in the cities only. ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଥିବେ ଆମେ ତ କନେକ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଯୋଉ ଡିଆଇସି କୁ କନେକ୍ଟ କରିବୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ମିଟିଂ କରିବୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଅଛି ଏନି କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଯଦି ଅଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଉପରେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମେ ମୁଁ ରପ୍ତାନୀ ଭବନରେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ବସିଛି ରପ୍ତାନୀ ଭବନରେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରି ପାରିବେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେବି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କଷ୍ଟମ୍ସ ହେଲା କି ଡିଜିଏଫଟି ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଏନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ କହିବି ପାରିବୁ ଆଉ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପ୍ରବ୍ଲେମ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନହେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବୁ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କରିବୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚାରିଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ www.fio.org ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ସବୁ କୋଉଦିନ ମିଟିଂ ହଉଛି WhatsApp ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଅଛି www.indiantradeportal.com
जो थी कि आपन प्राय 100 पाखापाखि कंट्रीज अच्छी जो थी कि रूल रेगुलेशन अच्छी कौ जिनस से एक्सपोर्ट करेंगे कौन रूल रेगुलेशन अच्छी आम बेनिफिट कौन पाइपर से सबू अच्छी मन रखा www.indiantradeportal.com indiantradeportal.com आमर मेन वेबसाइट को गले अपन पाइपर आ गोटे अच्छी लॉजिस्टिक सपोर्ट पाई www.easeoflogistics.com जो थे कि आपण माने लॉजिस्टिक रे गोटे साइड रे पूरा लॉजिस्टिक कंपनी लाइनर कंपनी अच्छी आ गोटे साइड रे एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स अच्छी तेणु नॉर्मली अपन से बेनिफिट नहीं पारे जब किसी क्वेरी जब पठेबे तेणु आप 10टा 50टा अपन इनक्वारी पाई परिबे गोटे कॉम्पिटिटिव रेट्स अपन पाई परिबे आ गोटे जो मानकर हैंडीक्राफ्ट्स अच्छी हैंडलूम प्रोडक्ट्स अच्छी जीआई प्रोडक्ट्स अच्छी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अच्छी गोटे फ्यू गोटे वेबसाइट करछि www.indianbusinessportal.com indianbusinessportal.com जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो आपण अमेज़न रे कि फ्लिपकार्ट रे कले कोन आपन ट्रांजैक्शन फी टा बहुत अधिका लगे बट एथरे टिके आपन कम लागिवो आ गोटे अछि आपनकर मोबाइल पय एप्स गोटे अछि निर्यात मित्र रो मोबाइल एप्स अछि सेतरा आपन अपडेटेड इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बहुत जिनस आपन पाइबे थरे देखंतु जा डाउट हला हम पचारले हमें ताको करिवु आ पाणीग्रा सार को हले हमर देवी सर तो जॉइन करि पालेनी ये पय कनेक्टिविटी पय सर मोबाइल ऐप निर्यात मित्र लॉजिस्टिक में कौन बोले कि ई आउट अछि easeoflogistics.com easy EASE logistics.com क्षेत्र आपण जदि कोन जिनस बाहर को पठाय चाहउछंती रेट केते अछि केते हो सेटा से माने गोटे रेट आपन को देबे गोटे कम जेतु समस्त देखुछ गोटे कॉम्पिटिटिव रेट्स आपन पाई परिबे तेणु आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद जो दया करी आपनकर मोबाइल नंबरटा आ नाटा छाड़ देले कोन हम नेक्स्ट टाइम आपन को डायरेक्ट आपन को हमें ये करबो कारण हमें विभिन्न ग्रुप रे पठौची तेणु हमें जानि परनु जे का हमें कोठी जाउची कोन होची बट हम पाखे किसी डाटाबेस रहउनी सो दैट कोन अपन हेले कोन हम मीटिंग पे ही डाकी परिबो जो गवर्नमेंट रो विभिन्न जो मीटिंग होची हमने ताको डाकी परिबो थैंक यू वेरी मच सर बहुत बहुत धन्यवाद गुड नाइट थैंक यू वेरी मच